Hello everyone, welcome back to the channel guys. My name is Aditya Prajapati and here I am going to teach you the 10 phrases of the meaning come. I will be telling very usable phrases here. So watch this video till then because it is going to be a very relevant video, very essential video, so that you guys can use those phrases in your day-to-day life conversations. So this is the basic idea of this video, because here I am teaching you guys how can you speak good English, how can you be fluent in English language. So only because of this reason I just started the 30 days phrases English challenge, so that you guys can learn the phrases that you guys can form the sentences with using these phrases and speak in your day-to-day life conversation. So in this challenge, if you are unaware about the challenge, so I am just repeating the challenge. I have started a 30 days spoken English phrases challenge, where I just have to teach you guys 300 different phrases with the 30 different meanings, and I will be teaching you guys with the consistency in just 30 days. It will be over, and I already have uploaded 7 videos of this challenge with different meanings, and this is going to be the 8th day of this challenge. So watch this video and dive into the video here, and without any further delay, let's get started. Before diving into the video, I want to give little bit introduction of myself, guys. My name is Aditya Prajapati and I come from very small village of Uttar Pradesh, and I have learned this language by myself by using YouTube and some tools, some tips, and it helped me a lot to learn this language. Only because of these reasons, only because of these tips, I am here. I am able to speak very good English with the confidence. I can speak in front of anyone. It doesn't matter ki they will make fun of me, because I practiced a lot, so it helped me a lot. Okay, so without wasting my time, let's come to the point. So guys, the phrase number 1, that is come along. Come along means होता है अच्छा होना, यानी कि किसी चीज का अच्छा हो जाना. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, his fever will come along, यानी कि his fever has come along. उसका फीवर ठीक हो गया, सही हो गया, उसका फीवर अच्छा हो गया. His fever has come along. Example number 2, everything is coming along nicely. सब कुछ अच्छा चल रहा है. सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम कैसे कहेंगे? Everything is coming along nicely. Okay. The phrase number 2, that is come after. Come after means होता है पीछे आना, यानी कि पीछे करते हुए आना. Example number 1, she is coming after me, या I will come after you. मैं आपके बाद आऊंगा. I will come after you. She is coming after me. वह मेरे पीछे आ रही है. Okay. Example number 2, the dog came after me when I ran. जब मैं दौड़ा तो जो डॉग है ना, वो मेरे पीछे आया. These were 2 examples and very common. So these vocabs you guys can use in your day-to-day life. These are very basic. You guys definitely have to know about it. And guys, the phrase number 3, that is come back. Come back means होता है वापसी करना, किसी काम से वापसी करना, किसी जगह से वापसी करना. जैसे एग्जाम्पल्स लेते. एग्जाम्पल नंबर 1, Khali will come back in this year in WWE. इस साल खली वापसी करेगा WWE में. Okay. Example number 2, I will come back after 2 days from that city. मैं उस शहर से 2 दिन बाद आऊंगा. Okay. And guys, the phrase number 5, that is come on. हमेशा यूज करते, we always use come on. तो what is the actual meaning of this? Come on means होता है जाने भी दो. जैसे कि examples लेते. Example number 1, come on, what are you doing? जाने भी दो यार, क्या कर रहे हो? Okay. Example number 2, come on, that's not fair. जाने भी दो यार, वो सही नहीं है. ये सही नहीं है. Come on, that's not fair. So these were 2 examples, very common examples that we always use.
Okay. And guys, the phrase number 6, that is come off. Come off means होता है छुटाना, किसी चीज को छुटाना. यानी it is not directly mean छुटाना. When example, I'm going to give you 2 examples you can relate. इसका डायरेक्टली मीन ये नहीं होता है कि छुटाना ही किसी चीज से अलग होना भी होता है इसका मतलब. जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, द वॉल पेंट विल नॉट कम ऑफ. जो दीवार पेंट है ना वो छूटेगा नहीं. एग्जाम्पल नंबर 2, द बटन ऑफ योर शर्ट हैज कम ऑफ. जो तुम्हारे शर्ट की बटन है वो अलग हो गई. तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं. ओके. फ्रेज नंबर 7, दैट इज कम अक्रॉस. अचानक से मिलना, मतलब किसी भी चीज से अचानक से मिलते हैं. जब मतलब जब हम चाहते भी नहीं है तब भी मिल जाते हैं उस चीज से, तो हम उससे बोलते हैं कम अक्रॉस. तो एग्जाम्पल्स लेते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1, आई केम अक्रॉस द की ऑफ दैट रूम. वह उस रूम की चाबी मुझे अचानक से मिल गई. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2, my old friend came across me when I was shopping. जब मैं शॉपिंग कर रहा था ना, मेरा पुराना मित्र मुझे मिला. तो ये इस तरीके से आप ही यूज करिए यार, बहुत ही यूजेबल है, बहुत ही यूजेबल. गाइस, द फ्रेज नंबर 8, दैट इज कम बाय. कम बाय मीन्स होता है हाथ लगना. यार कितना अच्छा फ्रेज है ना, कि जब हम यूज करते हैं कि हाथ लगने दे उसे, कम बाय यूज कर सकते हैं ना, कम बाय. तो ऐसे यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स लेते. एग्जाम्पल नंबर 1, यू विल कम बाय नथिंग. तुम्हारे हाथ कब कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही करते रह जाओगे. यू विल कम बाय नथिंग इफ यू आर डूइंग इट. यदि आप ये कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम. ये एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ डिड यू कम बाय दिस रेयर बुक. ये जो मतलब रेयर बुक तुम्हें कैसे मिली, कैसे तुम्हारे हाथ लगी. ये मतलब अच्छा, इस टाइप की बुक्स जो कभी मिलती ही नहीं है, तुम्हें कैसे मिल गई. तो ये है हाउ डिड यू कम बाय दिस रेयर बुक. इसका मतलब ये हुआ. ओके. सो गाइज, द फ्रेज नंबर 9, दैट इज come what may, that I always use, that I usually use come what may. तो come what means होता है कुछ भी हो जाए. तो एग्जाम्पल्स लेते. एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल अचीव माई एम कम what may. मैं अपने एम को, उद्देश्य को पा कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए. Example number 2, if you guys are dedicated towards learning this language, so you just have to think every day in the morning, come what may, I will definitely learn this language. यदि आप लोग इंग्लिश लर्न करना चाहते हो तो आपको मॉर्निंग में ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस लैंग्वेज को लर्न कर ही रहूंगा. Okay, so guys, these were very common and very usable 2 examples I have given here. And the phrase number, final one, or the 10th number phrase, that is come to know. Come to know means होता है पता चलने दो, यानी कि पता चला. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, I came to know about that meeting now. मुझे अभी उस मीटिंग के बारे में पता चला. Example number 2, that is I came to know about his death yesterday. मुझे कल ही उसकी मृत्यु के बारे में पता चला था. तो these were very common phrases that we guys every day use in our daily life in Hindi language. But from now you don't have to speak these kinds of sentences in Hindi language. You just have to try to form these sentences so that you guys can use those sentences, phrases in your everyday life. This is how you guys will be able to speak very good English. Otherwise, don't think about learning this language. If you want to learn this language, you will have to do it. This is the fact. Without doing hard work, how can you think about learning something new? For having something you never had, you will have to do something. You will have to do something you never did. जो आपके पास कभी था नहीं, उसको पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी किया नहीं. तो आप प्लीज हार्ड वर्क करते रहिए. बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ एंड लर्न एवरीडे यूजेस, फ्रेजेस. एंड मैंने जो चैलेंज स्टार्ट किया उसको प्लीज नोट डाउन एवरी फ्रेजेस एंड लर्न दोज फ्रेजेस. एंड आफ्टर दैट you just have to use in your speaking practice. Okay, so this was the video about the phrases of come.
Okay, if you like this video, please like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can never miss my videos, and comment on my videos. How am I making videos and on what topic do I have to make videos? I will try to make, I will try to help you all the times. Okay, so have a good day. Bye bye. We will meet in another specific video.